Two, unreasonable classification or irrational classification. And then there's a third element which most people forget. Judge-made laws added a third element. Even if unequals are not treated as equal, or equals are treated unequally, even if the classification is reasonable, it can be struck down on the ground it's arbitrary. Arbitrariness writ large on the face of this bill. Now, I want to know who gave answers to these questions. Please let us have the answers. Why are parliamentarians being told, you will not give answers to these questions, go to the court and find answers? Let us have answers to the question. Let somebody take responsibility for the answers and say, yes, the Attorney General of India has answered these questions and said, these are our answers, and therefore this bill is valid. I dare the government to lay the opinion of the law department. I dare the government to invite the Attorney General to this House to answer our questions. So what we are doing today is wrecking the Constitution from within. A small part of the Constitution is thought to be wrecked and demolished by this insidious bill. Fortunately, we have three organs of the state. The executive is complicit. The legislature is being invited to collaborate. Hopefully, the judiciary will strike it down and we will save India and the idea of India. Thank you. Sri KJ Alphonse, 5 minutes. So I strongly support this bill. So for thousands of years, India has given the most profound philosophy to the world which says, Vasudeva Kudumbakam. We gave refuge to people from all over the world who were persecuted. India was a place when after the crucifixion of Christ, Christians were persecuted. One of the disciples of Christ came to Kerala and set up the Syrian church. Sir, who allowed them to thrive? It's a Hindu community of India. Today, the Syrian Christians in Kerala are the most prosperous community. Why? Because India has allowed us to thrive here. This is the history of India. It's been a compassionate country. Your Honorable Mr. Chidambaram raised about the constitutional validity of this. So, the crux of the Constitution, all the rights we talk about, ultimately it's all about compassion. It's about a compassionate society. How we are able to look after the marginalized people, the deprived people, the oppressed people, and that is exactly what this bill is trying to propose to do. This is what we are trying to do. So, we have people who are persecuted. Now, Honorable Mr. Nada in his speech said, from 23% of people in Pakistan, minorities, today they are reduced to 2.3%. Sir, does it not call for a country like India to intervene and say, yes, this country welcomes you. We are human beings, and as human beings who always believed in this theory that this world needs to be run by compassion, you are welcome here. Sir, I don't need to tell the history how many thousands of people are persecuted, executed for silly reasons. Sir, Pakistan is governed by the Sharia law. There are 3.9 million Christians in Pakistan. Today we do not know what the number is. I can tell you briefly the history. Sir, in 2005, Sangla Hill killings, the Catholic Church, the Orthodox Church, and the Presbyterian Church, they were all razed to the ground. Sir, the Lahore bombings of 2013, in which the St. Paul's Cathedral was bombed and 100 people died. Sir, doesn't the world know about this? And sir, the Peshawar bombings, again of the Christian churches in which 70 people were killed. Doesn't the world know about this? Again, sir, it's in 2016, the Easter bombings in Lahore Cathedral, where 70 people were killed. Sir, here minorities are being butchered, are being killed. Shouldn't the voice of the oppressed people, the minorities who are butchered, shouldn't India give heed to those people, sir? Sir, we need to do that. And here is a country which is trying to undo all the injustice that is being done. Take, for example, Article 370. When we undid the injustice which has been there for 70 years, a lot of people said, no, this is anti-Islamic. I'm very sorry.
I'm very sorry. I come from a state, Kerala. I come from a different culture, different language. Why shouldn't I have an Article 370, sir? Why shouldn't? Why should Tamilians not have? Why shouldn't Gujaratis have? Why should my state of Rajasthan not have an Article 370? What is so specific, so incredibly different for the people of Kashmir to give you a 370? We abolished that, sir, because that was a constitution anomaly. We abolished. But what does the opposition say? We are un-Islamic. We are anti-Muslim. Sorry, sir. No, we are setting right what was wrong in history. We are setting right. So this country, look at the way it is looked after minorities. Look at the way it's provide protection. The Honorable Prime Minister said very clearly in the Parliament and also in Vigyan Bhavan, he said, you believe in whatever you want to believe, and I will ensure that you are allowed to live here peacefully and prosper. I will protect you, even though that word is not exactly the right word. I'm using that word. Sir, the Prime Minister has said very clearly, the Home Minister has said, sir, this land has been a home to everybody, to the oppressed, to the depressed, and therefore, sir, this bill which we are bringing to the Parliament, giving refuge to people who are persecuted, who have a right to live. And Swapan Das said very clearly, what is the International Convention? Says very clearly, wherever religious minorities are persecuted anywhere in the world has a responsibility to give them refuge. And that is what this bill does. And sir, I strongly support this. Thank you. Srimati Vizilaji, Jasatya. Thank you, Deputy Chairman, sir. It is a privilege for me to speak on this very important bill. As we are supporting the bill, I would like to bring to this august house a few apprehensions and suggestions that our dynamic Home Minister may take it into account, especially that has been given by our All India Anna Dravida Munneta Kalagam Supremo, our great leader, Dr. Purachi Talavi Amma. She asserted that she would take continuous steps to attain a separate homeland for Tamils in Sri Lanka and demanded the center to grant dual citizenship for refugees from the island nation living in our state. She once said, and I quote, we will urge the central government to confer dual citizenship on Sri Lankan Tamils living here so that they can easily get job opportunities, unquote. So she always fought for enabling Sri Lankan Tamils to live with full freedom and self-respect and to attain a separate elam that her government and personally she will continuously take valuable steps to bring forth. These are the people who were born to refugees and raised in this state. Some were born here for the refugees and they were living in the state. When the central government tried to repatriate them, the then central government, it was opposed by my government. That is, Amma said, my government opposed it. So the then central government. So she strongly stressed that her party, that is the All India Anna Dravida Munneta Kalagam, policy was that any repatriation would be voluntary and based on the choice of refugees. After the situation in Sri Lanka, including the security aspects, changes fully, better nation, better livelihood, self-respect, then the policy will change. So she strongly
she recalled that the Tamil Nadu Assembly has passed several resolutions on the Sri Lankan issue moved by her. And the Madurai bench of the Madras High Court agreed that granting citizenship was within the exclusive executive domain of the center. According to the records available with the Department of Rehabilitation of the state of Tamil Nadu, only 460,000 people have arrived in India and have registered themselves as repatriated Indian citizens from Sri Lanka. Other than refugee cards issued at the time of entry into the country, the Tamils do not have any document in support of their status. Now they are considered as stateless Indian origin Tamils from Sri Lanka, and the stateless Indian origin Tamils from Sri Lanka are kept together with the Sri Lankan Tamil refugees in the state organized camps in Tamil Nadu. They have no state identification and they are considered as Sri Lankan citizens. Their repeated claims for Indian citizenship were refused as on legal grounds as illegal migrants. They are not illegal migrants. There are 20,000 and more. Nearly 90% of them are born in India to these refugees. Most of these people are living in India for more than 25 years, maybe 30 years. About 90% of the population belong to the Hindu religion. So, as these Sri Lankan refugees fulfill all the required criteria, other than they are mentioned as illegal migrants, keeping in mind the experience of their prosecution by the refugees and the status of being persons of Indian origin, I plead to our Honorable Home Minister, kindly you include and consider that the citizenship bill also take into account the Sri Lankan refugees and give them Indian citizenship. Thank you. And with these words, I support this bill. Thank you. Sri K.K. Rage is not present. Sri K.K. Rage is not present. Sri K.T.S. Tulsi, not present. Dr. Narendra Jadhav, not present. Sri Sanjay Raut, 3 minutes. समय है यहाँ पर बोले त्रिपाठी 3 minutes. 3 मिनट में क्या होगा? वही समय है 6 घंटे के सर, अंदर। सिटीजन अमेंडमेंट बिल 2019 जो लोकसभा में पास होकर राज्यसभा में आया है, मैं देख रहा हूँ अलग अलग मत प्रवाह यहाँ देखने को मिले, और लोकतंत्र में इस प्रकार से अलग मत प्रवाह जब होते हैं, यही हमारी डेमोक्रेसी है। लेकिन मैं कल से देख रहा हूँ, कल से सुन रहा हूँ, ये कहा गया कि जो इस बिल को समर्थन नहीं करेगी वो देशद्रोही है। और जो बिल का समर्थन करेंगे वो देशभक्त है। सभी सदस्यों से मेरा आग्रह है, कृपया शांति रखें। मैंने ये भी पढ़ा है, मैंने ये भी अभी सुन रहा था। प्लीज आप बोलने दें उन्हें, आप उनकी बात सुनिए। संजय, जो इस बिल को समर्थन नहीं करेंगे वो पाकिस्तान की भाषा, उसका मतलब हम ये पाकिस्तान की असेंबली तो नहीं है। यहाँ हो या वहाँ हो, हम इस देश के नागरिक हैं। देश की जनता ने सबको वोट किया है, यहाँ भी किया है, वहाँ भी किया है, और देश की जनता ने वोट किया है।
तो पाकिस्तान के नागरिक की असेंबली नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर पाकिस्तान की भाषा हमको पसंद नहीं है तो हमारी इतनी मजबूत सरकार है, पाकिस्तान को खत्म करो। पाकिस्तान ऑक्युपाइड, हम आपके साथ है। आप संजय जी चेयर को संबोधित कर बोले और बीच तो में हम है आपके साथ। पाकिस्तान हो या जो हिंदुस्तान के हमारे जो भाई वहां इस देश में अल्पसंख्यक को उसको तकलीफ होती है, उनका छल होता है, तो हमारा एक मजबूत देश, मजबूत प्रधानमंत्री, हमारे मजबूत गृह मंत्री जी, आपके ऊपर हमारी आशा है। आपने 370 को हटाया, हमने जी जान से आपको समर्थन दिया है, देते रहेंगे। आज देश के बहुत से हिस्से में मैं देख रहा हूं इस बिल को विरोध हो रहा है, हिंसा हो रही है। असम हो, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, ठीक है, एक सेक्शन समर्थन में है, एक सेक्शन विरोध में है। वो भी देश के नागरिक है, देशद्रोही नहीं है। तो देशभक्ति का प्रमाण पत्र किसी से लेने की हमें जरूरत नहीं है। हम कितने कठोर हिंदू हैं उसका हमें प्रमाण पत्र नहीं चाहिए। जिस स्कूल में आप पढ़ते हो हम उस स्कूल के हेडमास्टर है, आपको बताना चाहिए। और हमारे स्कूल के हेडमास्टर बाला साहब ठाकरे थे, अटल जी भी थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे, सब हम सबको मानते हैं। मैंने आज अभी एक अखबार में पढ़ रहा था कि कश्मीर में 2 जवान शहीद हुए, मुसलमान थे, उनके परिवारों ने भी इस बिल को विरोध किया है। 2 शहीद हुए उनके परिवार, तो देशद्रोही तो नहीं है। मैं मानता हूं ये बिल धार्मिक नहीं है, ये बिल मानवता के आधार पर उसका ऊपर चर्चा होनी चाहिए। और हमें ये भी पता है कि घुसपैठ और शरणार्थी में फर्क है। तो क्या बिल पास होने के बाद संजय जी कंक्लूड करिए। इस देश के सभी जो घुसपैठ है उसको आप बाहर निकालेंगे? निकलना चाहिए तो निश्चित है ना। गृह मंत्री जी की कमिटमेंट है। नहीं, चुनाव के रैली में भी आप ही लोगों ने तय किया है बैठकर समय। कमिटमेंट है। इस देश के एक एक घुसपैठियों को हम बाहर निकालेंगे। अगर हम हमारे शरणार्थियों को यहाँ जगह दे रहे हैं तो घुसपैठियों को निकालना चाहिए। मैं ये मानता हूं कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में जो हमारे अल्पसंख्यक का भाई है, चाहे हिंदू है, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, उसके अधिकारों का हनन हुआ है। जबरदस्ती धर्मांतरण होता है, बेटियों के ऊपर अत्याचार होता है, हत्याएं होती है, और मानवता के आधार पर हमको संजय जी, अब उनको स्वीकार करना चाहिए। कंक्लूड करिए। उनको स्वीकार करना चाहिए, लेकिन हम उनको अगर स्वीकार करते हैं तो उसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए, वोट बैंक की राजनीति नहीं होनी चाहिए। उनको रोटी, कपड़ा, मकान, रोजगार, संजय जी कंक्लूड करिए। 2 मिनट अधिक हो गया। सकते हो। मैं अगले स्पीकर को बुलाऊंगा। कंक्लूड करें। जैसे कि मेरी पार्टी ने कहा है कि ये सभी लोग कितने हैं, जैसे आपने प्रास्ताविक में कहा गृह मंत्री जी ने कि लाखों करोड़ों लोगों की वेदना और उनकी आशा की बात आपने की। लाखों करोड़ों लोग आप यहाँ अगर ला रहे हो तो क्या उनको वोटिंग राइट मिलेगा? मुझे लगता है 20-25 साल तक उनको वोटिंग राइट अगर आप नहीं देते हैं तो देश में बैलेंस रहेगा। नहीं, आप दूसरी बात है, अगर शरणार्थी की है, 3 मिनट का समय है, मैंने 5 मिनट दिया। श्री प्लीज डोंट टेल मी। श्री मनोज कुमार झा, तो देखिए हमारे देश में प्लीज कंक्लूड। लाखों कश्मीरी पंडित जो शरणार्थी है, दिन से 70 हटाने के बाद ऑलरेडी यू हैव टेकन 6 उनके मिनट्स भी मन में आशा की उम्मीद जागी थी। संजय जी कंक्लूड। कि हमारे गृह मंत्री जी आपकी बात रिकॉर्ड पे जाएगी। श्री मनोज कुमार झा, आप बोले, आपकी बात रिकॉर्ड पे जाएगी। अगर मैं दूसरे स्पीकर को बुलाऊंगा फिर श्री प्रफुल्ल पट नहीं देन आई विल कॉल अब श्री संजय जी की बात नहीं जाएगी रिकॉर्ड पे, आपकी बात रिकॉर्ड पे जाएगी। आप बोले
नहीं बोले दूसरे स्पीकर को मैं बुलाऊंगा कर रहा हूँ। श्री प्रफुल्ल पटेल नॉट प्रेजेंट। श्री सतीश चंद्र मिश्रा प्लीज सतीश चंद्र मिश्रा जी, आपकी बात रिकॉर्ड पे जाएगी, आपकी बात रिकॉर्ड पे जाएगी, आपकी बात रिकॉर्ड पे जाएगी। प्लीज नहीं जा रही है बात रिकॉर्ड पे। प्लीज कृपया समय का पालन करिए। ये समय 6 घंटे की बहस का आप सबने मिलकर तय किया है। आप सतीश चंद्र मिश्रा जी, आपकी बात रिकॉर्ड पे जाएगी। आप प्लीज स्पीक। माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी, आप बोले, आपकी बात रिकॉर्ड पे जा रही है। सर, आपकी बात रिकॉर्ड पे जा रही है, आप बोले, उन्हें ही जा रही है। ये ऑलरेडी एक्सीडेड इस टाइम। प्लीज साहब, दो लोग कैसे बोलेंगे? नहीं, आप बोले, आपको मैंने बुलाया नाम, चेयर का नाम नहीं लिया। नहीं, आई विल कॉल प्लीज। नो, सतीश चंद्र मिश्रा जी, रिफ्यूज प्लीज। आई विल कॉल अगेन। Honorable I'll call again. sir. I will call you again now. I will call you again. You refuse to speak. Please, no. Satish Chandra Mishra ji. That is not my, you have to take care of that. That is not. Please. Honorable Deputy Chairman sir. Honorable Deputy Chairman sir. एक तो मैं सबसे पहले अपनी बात शुरू करने के पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि आप नाराजगी छोड़ करके कभी कभी मुस्कुरा भी दिया करें। हम ऐसा मुस्कुराते हैं जो समय हम लोगों का जरा सा मन लगा रहेगा। माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी, 6 घंटे बहस का समय आप लोगों ने निर्धारित किया। मैं समझता हूँ कि आप ही उसका पालन कर रहा है। टाइम का प्रेशर है। मैं अपनी बात शुरू करने के पहले, और टाइम एक्सटेंड कर सकते हैं आप, हम पूरा हाउस चाहता है टाइम एक्सटेंड। आप लोगों ने समय तय किया, टाइम एक्सटेंड कर सकते हैं। माननीय चेयरमैन साहब के आदेश के अनुसार मुझे पालन कर रहा है। प्लीज नोट टेल। ऑनरेबल, हमारा टाइम अब स्टार्ट करवाइए। हाँ, चलिए आप। ऑनरेबल डिप्टी चेयरमैन सर, मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि हम लोग इस बिल के समर्थन में नहीं खड़े हुए, इसको अपोज करने के लिए खड़े हुए हैं। क्यों खड़े हुए हैं? जबकि एक तरफ हम इस बात के लिए माननीय होम मिनिस्टर साहब को बधाई देना चाहते हैं, उनकी तारीफ करना चाहते हैं कि जो लोग पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में जहां पर भी जो माइनॉरिटीज हैं वो रह रहे हैं, उनके लिए आपने सोचा, आपने उनको सोच करके आपने कहा कि आपने अलग अलग, हम टाइम कम है इसलिए कास्ट का नाम नहीं लेंगे, आपने सिर्फ मुस्लिम को छोड़ के वहां की जो माइनॉरिटीज हैं उनको लेकर के आपने कहा कि उनको हम यहाँ पर शरणार्थी के रूप में और सिटीजनशिप देंगे। ये वेलकम करने लायक। लेकिन इसके साथ साथ में ये भी कहना है कि आपने 2014 की डेट क्यों लगाई है 31 दिसंबर? क्या उसके बाद के लोगों को हक नहीं है कि जो लोग 45 के आ रहे हैं वो इस देश के यहाँ पर आकर के सिटीजन बन सकें? इसका जवाब हम लोग जरूर जानना चाहेंगे। 31 दिसंबर 2014 कट ऑफ डेट किस कारण, किस बेसिस पे करी गई है? इसके साथ साथ में हम लोग अपोज क्यों कर रहे हैं इसको? अपोज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो वेरी प्रियम्बल है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, it speaks about secularism and there should not be any favoritism. It should, everybody has to be treated equal. इसको आपने, हम लोगों ने जब कहा गया, ये कई लोगों ने कहा कि आर्टिकल 14 का वायलेशन है, आर्टिकल 15 का वायलेशन है, आर्टिकल 21 का वायलेशन है, तो एक तर्क आया जो कि सुनने को मिला सत्ता पक्ष की तरफ से। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 15 को पढ़ लीजिए, उसमें सिटीजन वर्ड लिखा हुआ है। लेकिन इसके साथ साथ आर्टिकल 14 को भी पढ़ लीजिए, आर्टिकल 21 को भी पढ़ लीजिए, वो वर्ड सिटीजन यूज नहीं करता, वो वर्ड पर्सन यूज करता है, और एनी पर्सन वर्ड यूज करता है। तो अगर एनी पर्सन को, जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क बनाने वाले जो लोग थे, संविधान के रचयिता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के साथ में मिलकर जिन्होंने संविधान बनाया, तो सोच समझ करके ये डिस्टिंक्शन रखा। This distinction has been kept keeping in mind because in the same fundamental rights chapter, there are two different words used in Article 14, Article 15 and Article 21. So therefore, why are you violating this Article 14 by excluding Muslims? Now, Muslims being excluded is the sole problem of this entire act. And this act is bound to fail. The soul of the constitution, जो कि है, आपने सेकुलरिज्म का मेंटेन रखेंगे, धर्मनिरपेक्षता मेंटेन रखेंगे, you have taken away that.
And by taking away that, you have brought this act, which is not a constitutional amendment, and इसलिए मेरा आपसे ये कहना है कि आप इसको जरूर दोबारा से इसमें करें, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर of this country otherwise will be definitely lost, and which will be a very sad day. जैसा कि कई और लोगों ने भी कहा कि इसका टेस्ट अभी और एक जगह होगा, यहाँ तो हम लोग संख्या बल पे या किसी और बल जो भी है एक एक्ट बन जाएगा, पास हो जाएगा, लेकिन अगर पास हो जाता है तो इसके बाद इसका टेस्ट होगा, आर्टिकल 14 का टेस्ट होगा, आर्टिकल 21 का टेस्ट होगा और प्रीएम्बल टेस्ट होगा। फ्रेमवर्क क्यों बनाया गया, इसको सेक्टरल वर्ड क्यों लाया गया, बेसिक स्ट्रक्चर अगर तोड़ दिया जाता है तो वेदर सच एन एक्ट विच इज एन एग्जीक्यूटिव एक्ट आप ला रहे हैं यहाँ से बना करके, ये सस्टेन करेगा कि नहीं करेगा, ये सामने आएगा। और चूंकि आपने इसमें इन चीजों का वायलेशन किया है तो हमारी पार्टी इसलिए इसका विरोध कर। थैंक यू। प्रोफेसर मनोज कुमार झा। सभापति, उपसभापति महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सदन में और इतिहास में कई ऐसे क्षण आते हैं जब आसानी से ये कह दूं कि समर्थन कर रहा हूं या विरोध कर रहा हूं, उससे बात नहीं बनेगी। सर, मेरा 3 मसलों पर मेरी आपत्ति है माननीय गृह मंत्री जी। पहला सैद्धांतिक, दूसरा ऐतिहासिक, तीसरा व्यवहारिक। माननीय गृह मंत्री जी, हम तो बचपने से पढ़ते थे, अयं निजः परो वेति गणना लघु चेत साम उदार नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। कहां से कहां आ गए हम, कहां से कहां पहुंच गए। इसलिए कह रहा हूं माननीय उपसभापति महोदय गृह मंत्री जी से कि मायूस कर रहा है नई रोशनी का रंग, न इसका कुछ अदब है न कुछ एतबार। सर, मैं 2-3 चीजें कहना चाहता हूं। जेपीसी हुई थी तो एक्सपर्ट्स ने कहा था कि प्लीज यूज परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज और रिलीजियस लाइंस को अवॉइड करने की बात कही थी। माननीय गृह मंत्री जी,